Okay everyone, so let's start this meeting again and I just want कि अब हम पर्सनल स्टेटमेंट वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं और राहिमा आई जस्ट वांट अगेन कि पहले आप सबसे पहले हमें पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में बता दें कि हाउ व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाइल राइटिंग द पर्सनल स्टेटमेंट और हाउ यू ट्राई टू मेक योर पर्सनल स्टेटमेंट डिफरेंट और Okay, so talking about this personal statement, or you also can say it as SOP. Firstly, I would say कि most of the people might say you क्या like बहुत fancy words use कर लो. I would say don't use it at all क्योंकि आप interview होगा ना तो आपको साफ पता चलेगा कि बंदे ने या तो कहीं से कॉपी किया या फिर किसी और से लिखवाया. So firstly, don't use the fancy words, but instead use some strong words, maybe like leadership, maybe like collaboration, initiative. आप बेशक गूगल कर लो, you can find the list of some strong words. And the second thing about SOP is, see, there is one strategy. आपके माइंड में पहले होता है समथिंग के आपने SOP में यह लिखना है, आप सारा लिखो. डोंट थिंक अबाउट दिस वर्ड लिमिट और दी इधर इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड और नॉट. जस्ट अपने आइडियाज सिर्फ लिख लो. इधर इफ इज लाइक क्रॉसिंग द लिमिट एज वेल, जस्ट डोंट केयर अबाउट इट. पहले कर लो, उसके बाद बेशक उसे ब्रेक डाउन कर लो कि मैंने किस तरह से इसे स्पेसिफिक करना है, फिर मे बी मैंने किस तरह से इसे अच्छा बनाना है बेहतर. एंड सेकेंडली या इट हैज टू बी वेरी पर्सनल. गूगल पे आपको बहुत सारे मिलेंगे सैम्पल्स. नेवर नेवर कॉपी इट एट ऑल. इवन डोंट कॉपी द आइडियाज. हर कोई यही लिखेगा आई बिलोंग टू अनप्रिविलेज्ड एरिया और आई बिलोंग टू इंटीरियर सीन समथिंग लाइक दैट. डोंट डू दैट. इवन इफ यू आर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, उसे आप स्टोरी टेलिंग की तरह यूज करो. मे बी यूज इट लाइक दिस के पास में आपको क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इश्यूज थी ड्यू टू लाइक मे बी फाइनेंशियल, मे बी ड्यू टू योर बैकग्राउंड और समथिंग. उन उन डिफिकल्टीज को आपने कैसे ओवरकम किया और अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो. लाइक अलोंग विद दोस डिफिकल्टीज आप स्टिल क्या क्या आपने अचीवमेंट्स किए. यू ओके कैन लिस्ट डाउन योर एंड देन लास्ट में फिर आप अपने फ्यूचर गोल्स कहते हो कि मेरे फ्यूचर गोल्स क्या है, वो सूसी से रिलेटेड क्यों है. हाउ कैन आई बेनिफिट द सूसी प्रोग्राम और द सूसी फेलोज एंड हाउ I can get benefit from their program. So yeah, I would say make it personal. Just show your storytelling skills and be honest. क्योंकि आपके आपसे like questions पूछे जाएंगे आपसे SOP से related और आपके बाकी essay से related. So yeah, I would say write it yourself. And the most important thing is कि हर दूसरे बंदे से रिव्यू ना करवा लो. I have seen people जो कि 10 लोगों से रिव्यू करवाते हैं. इस तरह से आपकी पूरी जो स्टोरी थी, मेन थिंग अबाउट योर SOP is your story. अगर वो चेंज हो गए, there is nothing gonna be left in your SOP. So don't ask everyone to review it. अगर आप कहते भी हो तो maybe just 1 or 2 people ओके जस्ट के आपका मे बी और इस तरह की चीजें चेंज करवा दे, स्टोरी चेंज ना करें. अच्छा अच्छा इसमें एक क्वेश्चन का एसओपी का एक पार्ट है व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू योर फेलो एक्सचेंज पार्टिसिपेंट सो हाउ यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ओके सो सी उसमें आपका आई विल से जस्ट 2 थिंग्स अबाउट दिस. एक तो ये होता है कि आप किस तरह से सूसी को बेनिफिट कर सकते हो और दूसरा ये कि आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको खुद सूसी प्रोग्राम से. तो ऑब्वियसली आप वो तो लिख लेते हो कि ठीक है लाइक सूसी से आई विल गेट द डाइवर्सिटी, आई विल गेट एक्सपीरियंस ऑफ अमेरिका एंड दिस ऑल थिंग्स. जब हाँ कि आप बेनिफिट दे सकते हो यूज के लाइक मे बी यू गिव दिस काइंड ऑफ स्किल्स एंड using these skills you can collaborate in the group activities. You can since it's a diverse program, बाकी nationalities के लोग होंगे. I'm talking about the women leadership again क्योंकि उसमें like बाकी countries बहुत सारे लोग होंगे. So you can explain के how I can use my background or maybe how can I use my experience in that program. okay okay so Sayed Hussain, now it's your turn to explain the personal statement. I will request you to explain your personal statement and break down in 3 parts. Why do you think you are competitive? How you will contribute and expect this how this experience will benefit you. So किस तरह से आपने पर्सनल Okay, स्टेटमेंट को so लिखा? ठीक है. पर्सनल स्टेटमेंट सबसे पहले आई वुड एग्री विद रहीमा. चैट जीपीटी ये बड़े लाइक ये एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है. उनको भी पता है कि लाइक इंग्लिश इज़ नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, दे नो दैट. तो अगर आप लोग इंग्लिश के बहुत एडवांस यूज वर्ड करेंगे, काइंड ऑफ एक लिटरेचर की तरह आप उसमें अपने पर्सनल स्टेटमेंट में आप इंग्लिश को प्रेजेंट करेंगे, सो डोंट डू दैट.
सेकंड वर्ड चैट जीपीटी को बिल्कुल अवॉइड करना है, उनको पता चल जाता है कि यार ये इन्होंने चैट जीपीटी से लिखा है। थर्ड पॉइंट ये, अगर आपको खुद को प्रिपेयर करना है, टेक अ पेन, टेक अ पेज एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग। लिखो खुद के बारे में, तुम्हें अपने बारे में जो, और आप लोगों को अपने बारे में जो भी पता है, जस्ट राइट, वेदर दैट्स गुड और बैड। एक दफा लिख लिया, एक पेज आ गया, दो पेज आ गया, लिख लिया, यू ब्रेनस्टॉर्म, तब उस जाके अपने पेपर को खुद रिव्यू करो एंड देन यू हैव टू लाइक डिसाइड कि कौन सी चीज मैं इसमें डालूं, कौन ना डालूं। फिर ये है कि ट्राई टू मेंशन द एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज दैट यू डू इन योर यूनिवर्सिटी और यू whatever यूनिवर्सिटी you're in, whether that's debates या कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन या जो भी है। तो the question that Shahid bhai asked was that why do you think you're competitive for this program? Try to relate each of these questions with your personal statements. ये जो आपका जो क्वेश्चन है उसके साथ आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि प्रूविंग माय एक्सपीरियंस, लेट्स से इफ आई एम एन इवेंट ऑर्गेनाइजर इन माय यूनिवर्सिटी, और वो मैंने एक पर्सनल स्टेटमेंट में लिख लिया और मैं ऐसा क्वेश्चन फेस करता हूँ, सो आई विल राइट दैट proving my past experience in in event management or event organizer, I have quite good experience in this thing or in this regard, that will prove helpful in me coordinating with other people that belong from different cultures. तो एक तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया था। सेकंड क्वेश्चन शायद भाई कौन सा था? अच्छा, second part was how you will contribute to your fellows in exchange parties or in exchange. एग्जैक्टली exactly. तो उसका उसका भी यही आता है कि यू, अगर आपने अपने पर्सनल स्टेटमेंट में ये लिखा है कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैंने कोई ब्लड कैंप अरेंज किया है, या मैंने कोई और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है जो कि मेरे कॉन्फिडेंस का बेस बन गई हैं, सो आई हैव नो प्रॉब्लम with communicating with people that are from different countries or from different ethnicities or different cultures। इसी तरह आप अपनी ही पर्सनल स्टेटमेंट को रिलेट करते जाएं। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने अच्छा लिखना है और सच लिखना है। ये इस तरह की चीज आप लोगों ने नहीं लिखनी। जस्ट रिमेंबर, इट्स नॉट सम काइंड ऑफ टिपिकल पाकिस्तानी इंटरव्यू दैट यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर। जस्ट लाइक गो विद द मोस्ट नेचुरल थिंग्स दैट यू डू। इवन आपके आपके फ्री टाइम में आपको सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, आप वो लिखो। ये नहीं है कि इट विल प्रूव टू बी लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनल स्टेटमेंट और योर प्रोफाइल। आपको मूवीज अच्छी लगती हैं, यू प्ले गेम्स, यू सिंग, यू डांस, दैट्स ओके विद देम। बस जो है सच लिखना है। एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, अगर इट वुड बी अ टिप कि इवन अगर किसी के पास नहीं है, कोई नहीं करता, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करता है, कोई मैनेजमेंट नहीं करता, कोई लाइक एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज वो नहीं करता, अ टिप फ्रॉम माय साइड इज दैट एक एक्टिविटी के बारे में जानो, उसको स्टडी करो कि यार ये होता कैसा है, कभी आपने किया नहीं है। Do mention that in your personal statement. They don't ask for certifications, but it is a plus point for you guys जिन्होंने कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया। तो ऐसे एक एक्टिविटी को उठाओ, उसके बारे में पढ़ो कि कैसा होता है, देन मेंशन दैट। तो अगर वो पूछे भी तो आप कह सकते हैं यू डू नो अबाउट दैट थिंग। Okay, so our second participant is Shahzeb Ali, and please explain us किस तरह से आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को लिखा और किन चीज़ों का आपने पर्सनल स्टेटमेंट में ख्याल रखा, और कैसे हमारी ऑडियंस पर्सनल स्टेटमेंट को लिखते हुए किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। से बोली गायब हो गए। Okay. Yes. I'm sorry, Shahid. Am I audible? Yes, you are audible. Yes, you are audible. Hello, am I audible? Yes, you are Shahid, audible. could you please confirm? Yes. अच्छा, आपकी वीडियो All right. लाइक हाँ। So, perfect. Thank you. Okay. I hope the network is fine now. So I would completely agree with whatever Rahima and Hussein mentioned, and I would not repeat all those things. You have to be definitely realistic. You have to be definitely should have your own ideas. Coming back to the question, how I framed my personal statement, I would say that I followed the strategy that Rahima pointed out. कि आप अपने आइडियाज को सिंपली लिखें, डिवाइड करें, एंड देन डू नॉट थिंक about word limit, do not think about fancy English, do not even think about grammatical errors. At first point तो आपको सिर्फ अपने आइडियाज चाहिए,
So do write whatever the ideas are, then you can shortlist and then you can improve it. लेकिन मैंने अपनी SOP को personally 3 हिस्सों में divide किया था. I divided it into the 3 parts. So the first part mainly talked about my story, my struggle, or you can say my journey. And always understand, I have read few SOPs and reviewed it. तो कुछ students ने quotation से, poetry से, इस तरह की चीजों से, for example, this quote became my inspiration, this personality became my inspiration. Do not start with these. Start with your own self. Start by telling your own story. अपनी story बताएं. आपने अगर कोई struggles face की हैं वो बताएं. And you have to be realistic in this regard. और अपनी जर्नी को किसी ना किसी स्टोरी में कन्वर्ट करके एंड टेल अ स्टोरी टिल द एंड. So that was the case how I started. I started with my story of getting education in the very early age and then coming into the field of law. So this is something I told as a story. In the very second part, I discussed about my objective and career. So regarding objective, I would say I have reviewed few SOPs in past few days, and I've come to know कि mostly students अपने goal को, अपने career को, objective को बहुत ज़्यादा general कह लें या for example I am a law student. तो mostly law students क्या करते हैं, वो लिखते हैं कि I just want to become a lawyer and serve humanity. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं और वकील बनना चाहते हैं, लेकिन पहले तो अपने करियर के हवाले से 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं. देखिए, वकालत बहुत बड़ा शोबा है, उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं. यू हैव टू स्पेसिफाई कि मैंने पर्टिकुलरली इस फील्ड में एक्सेल करना है और मैं एग्जैक्टली ये करना चाहता हूँ. ये कहना बहुत आसान है कि मैं वकील बनना चाहता हूँ, लेकिन उस पर रिसर्च करके बताना कि मैं पर्टिकुलरली लिटिगेशन के इस एरिया में इंटरेस्टेड हूँ और इस एरिया में एक्सेल करना चाहता हूँ, that is something required. This actually shows that you are clear about your goal. You have no ambiguity regarding your objective or the career. So that was the second part where I discussed more about my career. In the very third part, what I did is the third part mainly focused on two things. Firstly, it focused on how the SUSI experience, and the SUSI is definitely for student leaders. So you have to be student leader for that. How SUSI for student leaders from Pakistan on comparative public policy making will help me in achieving my goals. So for example, if my goals are to become a human rights lawyer, I would say that by studying public policy making and particularly comparative public policy making, it would be easy for me to understand how policies impact the implementation of fundamental rights. So in some way, I would say you have to build a connection from your career to SUSI experience. If you're able to prove that SUSI experience will help you a lot in achieving a goal, in achieving your ambition, and your ambition is clear, ambition is absolutely, it has no ambiguity, or उस हवाले से आप अभी से struggle कर रहे हैं, so then you will be able to prove that this is something mandatory for me, or this is something I deserve the most. ठीक है ना? तो एक connection draw करना है. और secondly, in the very second part, आपने कहीं ना कहीं जाहिर है बेशक ये एकेडमिक प्रोग्राम हो, लेकिन ये कल्चरल प्रोग्राम भी है. सो इट कल्चर इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा उसको यूएस कल्चर का यूएस सोसाइटी के साथ भी लिंक करना है. फॉर एग्जांपल, मैंने अपने केस में कहा था कि आई वांट टू बिकम अ ह्यूमन राइट्स लॉयर, एंड देन आई टोल्ड यू हाउ आई कनेक्टेड इट विद SUSI पब्लिक पॉलिसी मेकिंग. And then I also mentioned that how experiencing the US culture and society that has high respect for human rights, for animal rights, for environmental laws, for individual dignity, and of course it has few of the most prestigious law schools. So that would ultimately help me in achieving my goal. तो कहीं ना कहीं कल्चर को भी, कहीं ना कहीं यूएस सोसाइटी को भी आपने लिंक कर दिया. So I would say in the third part, build the connection between SUSI or the program you're applying and your career. So that is actually how a good SOP is formed. And then I would say I would completely agree कि बहुत ज़्यादा revisions भी नहीं करवाने, अपने ideas real रखने हैं. मैं try to have coherency in it, कोई बहुत ज़्यादा disconnection और मुख्तलिफ चीज़ें ऐड ना कर दें. स्टोरी टेलिंग का फायदा ये होता है कि उसमें कोहेरेंसी बहुत ज्यादा होती है. हर एक सेंटेंस का यानी अगले सेंटेंस का पिछले सेंटेंस के साथ कहीं ना कहीं आइडिया में भी और वर्डिंग में भी कनेक्शन होता है. तो ट्राई टू बिल्ड दैट कनेक्शन एंड definitely do not try to add too much fancy words in it. Okay, Abdul Qadir रह गए हमारे पास. So now Abdul Qadir, are you unmuting yourself? And Unmute me.
Okay, now you're on. ओके तो या ठीक। तो एसओपी की अगर हम बात करें तो एसओपी के अंदर ना सबसे पहले जो मेन चीज आपके पास होती है दैट इज स्टोरी टेलिंग बिहेवियर। मतलब आपकी पूरी एसओपी के अंदर एक ऐसी टोन होनी चाहिए कि वो एक स्टोरी टेलिंग की बात करे, मतलब वही चीजें कनेक्ट करे। मतलब आपकी फर्स्ट बात जो आपने कही, पहली बात आपने कही, वही आपकी आगे जो बात मतलब पैराग्राफ हो उनके अंदर वो चीज रिपीट हो रही हो, मतलब एक कनेक्ट हो रही हो, कनेक्शन हो रही हो। नॉट रिपीट इन सेंस कि यार मतलब सेम चीजें हो, बट एक कनेक्शन डेवलप हो रहा हो कि चीजें एक दूसरे से, मतलब पढ़ने वाले को ये लगे कि मैं अगर शुरू करूं तो मैं पूरी खत्म करूं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आपकी इस पूरी एसओपी में एक स्टोरी टेलिंग बिहेवियर होना चाहिए। अगेन बाकी आप जो इसको ब्रेक डाउन करो तो आपको इस तरह करो कि 50 वर्ड्स आप उसको करो कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लो, अपने स्ट्रगल बता लो, क्योंकि एसओपी आई थिंक 250 वर्ड्स की है। तो आपने स्पेसिफिक रहना है, आपने बातें ज्यादा नहीं करनी, जस्ट बी रियलिस्टिक और बी स्पेसिफिक। 50 वर्ड का आपने इंट्रो दे दिया, देन अगेन आप मूव करो कि 100 वर्ड्स पे आ जाओ कि आपने कि वाई यू एस वाई यू, इनके जो जवाब आते हैं, जो वाई के क्वेश्चन होते हैं, दीज आर मेन इन द एसओपी। कि वाई यू, आपको ही क्यों चुना जाए, व्हाट आर द क्वालिटीज इन यू, या आपने कोई ऐसी अचीवमेंट की। अब जिस तरह मैं एक बुक एसओपी पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि यार एक बहुत अच्छी मुझे लगी, उसमें ये था कि उसने लाइक अपने एज वाइज किया हुआ था कि एट एज 5 मैंने ये किया, एट एज 15 मैंने ये किया, मतलब एक पूरा उसने स्टोरी टेलिंग बिहेवियर उसके अंदर था। उसने बुक लिखी, उसने उस बुक से क्या सीखा, तो एक पूरा मतलब एक टोन था, कनेक्शन। आखिरी जो 100 वर्ड्स हो ना आपके, तो उसके अंदर मेक श्योर कि आप लोग लिखो कि आप यूएस क्यों जानना चाहते हो। ठीक है। अब यूएस का मतलब यू कैन इंक्लूड के यार, अगर मैं अपनी बात करूं तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, इकोनॉमिक्स का अगर वर्ड हम देखें तो इससे ही रिलेट करता है पॉलिसी मेकिंग। मतलब इकोनॉमिस्ट ही डू मतलब यूजुअली डू पॉलिसी मेकिंग थिंग्स, एवरीथिंग जो रिलेटेड होती हैं। तो अगर आप इस हवाले से लिखो, अब जिस तरह मैंने इंक्लूड किया था कि यार अगर मैं इकोनॉमिक्स परस्यू कर रहा हूँ और वी आर इनटू दिस पॉलिसी मेकिंग थिंग, तो यूएस के अंदर ऐसी फील्ड्स या ऐसी लेबोरेटरीज या ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करेंगी पॉलिसी मेकिंग में फॉर एज एन इकोनॉमिस्ट। मैंने हाईलाइट किया 2-3 प्रोफेसर्स के मैंने नाम लिखे जो मतलब अपनी उस फील्ड के अंदर बहुत अच्छे जाने जाते हैं। अब अगर आप देखो तो रिसेंटली एक हार्वर्ड के एक इकोनॉमिक्स है यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा कि काफी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी हैं, तो आप लोग वो हाईलाइट कर सकते हो कि उनको रिसेंटली मतलब इस काम पे आप उनका काम पढ़ो, थोड़ा बहुत रिसर्च करो कि इस काम की बिना पे उनको नोबेल प्राइज मिला। तो आई वुड लव टू सी द कल्चर की, या कौन सी चीज है वहां पर है पाकिस्तान में नहीं है, या पाकिस्तान में है वहां पर नहीं है। तो ये चीज आप रिलेट करो और दैट्स इट। मतलब वही अगेन मतलब स्पेसिफिक ज्यादा, रहीमा ने जिस तरह मेंशन किया कि अपनी एसओपी ज्यादा रिव्यू ना करवाओ। रिव्यू करवाने से यही होगा कि आपको मैं कुछ और बता दूंगा, अगर हम 5 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा और वो मैसअप हो जाएगा, इट वुड टोटली गेट मैसअप, और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने क्या लिखना था और मैं क्या लिखूं अब। तो मेक श्योर कि ये चीज ना हो। बाकी अपनी फील्ड के हिसाब से आप चीजें मेंशन करो। अब जिस तरह कोई वेट वाला, अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो वो उस हिसाब से लिखे कि मेरी जर्नी क्या है, मुझे पॉलिसी मेकिंग में क्या करना है, और मुझे यूएस का सोसाइटी या यूएस का कल्चर स्पेशली वो क्या करेगा। सेकंड अगेन जिस तरह शाहजेब ने मेंशन किया कि ये कल्चर एक्सचेंज भी है, तो आप अपने कल्चर के बारे में दिखाओ कि आपका कल्चर कितना रिच है, आप अपने कल्चर को किस तरह शो करोगे, और यूएस के कल्चर से आप क्या चीज लेके आओगे। तो यूएस का कल्चर जिसका बहुत डाइवर्स कल्चर है, वी अब अगर हम अपनी सारी रिलेट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट जितने भी हमारे, तो यूएस के अंदर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, मतलब इवन चाइनीज, इंडियन, हर तरह के लोग होंगे। तो आप उनसे क्या सीखोगे, आपने उन्हें क्या सिखाओगे। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान, एक सवाल पूछा जाता है, थोड़ा बहुत होता है ना कि उनके दरमियान उनकी चीज अंदर मशहूर है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे खत्म करोगे। अगर कोई बंदा इस हवाले से कोई ऐसी बात लिख दे अपने एसओपी में, आई थिंक दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट कि यार मैं उनका जो स्टीरियोटाइप है या उनके जो, लेट सपोज कि उनके दिमाग के अंदर कोई चीज घूम रही है, उसको कैसे खत्म करना है। तो मेक श्योर कि आप इस चीज को लिखो। आई थिंक दैट्स इट, एसओपी आपकी इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। और बी स्पेसिफिक, 250 वर्ड्स आई थिंक बहुत जल्दी, अगर बंदा लिखना चाहता है 250 वर्ड्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो मेन मेन चीजें जस्ट हाईलाइट कि आप जो मेन चीज है आपके पास, दैट्स इट। Okay, so Raima want to say something. ओके शाल। Okay. I just wanted to say a few more things. See, जब आप लिखते हो ना SOP में कि I want to go to America for like maybe there are these opportunities,
ऑब्वियस इसमें ये पॉइंट आएगी कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट प्लीज बी माइंडफुल कि आपने इतना ज्यादा पाकिस्तान की बुराई नहीं करनी कि सामने वाले बंदे को ये लगे कि ये तो बस पाकिस्तान से निकलना चाहता है। इसलिए आप लोगों ने जाना है, अपने वापस भी आना है। सो मेक श्योर कि आप उस चीज को मेंशन करो अपने एसओपी में कि आफ्टर कमिंग बैक टू माय कंट्री आई विल डू दीज या फिर मे बी आई विल यूज माय नॉलेज और एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट। सो या मेक श्योर कि आपने ये कम बैक वाली पॉइंट ऐड करनी है और पाकिस्तान के बारे में ज्यादा कोई बुरी बात नहीं कहनी है। एंड लास्टली आप सुसी जो सुसी की वेबसाइट है वहां पे जाओगे, सो देयर आर फ्यू रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर कैंडिडेट्स दैट दे वांट टू। आप वो चीजें पढ़ लो कि कौन कौन से क्वालिटीज चाहिए, उन चीजों को अपने एसओपी में यूज करो। मेक श्योर टू यूज दोस वर्ड्स। मे बी फॉर एग्जांपल अगर वो लोग कह रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर समवन हु इज मे बी लाइक enthusiasm for exchange, for culture exchange, or maybe for the diversity things. So make sure कि आप वो जो strong words है use करो. Again, I'm saying don't use the fancy words, but use the strong words in your SOP that the SUSI program themselves they have used those words in their website. ओके, सो अभी हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, और राहिमा इट्स मोर रिलेटेड टू योर प्रोग्राम जिसके लिए आप सिलेक्ट हुई थी, क्योंकि बिकॉज इसमें हमें उन्होंने फीमेल लीडरशिप के बारे में हमसे क्वेश्चन किया। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, ठीक है? तो यहाँ से हम ओके अभी आपको, तो ये हमारा पार्ट है जिसके अंदर what are the main challenges that female leaders face in Pakistan society? How do you think this affect their performance at work? So how आप इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करते अगर आप ये एप्लीकेशन फिल कर रही होती? Okay, so see when we talk about this female leadership, obviously आपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, तो पहले like this is just my suggestion, obviously there's no need to copy these all things, ठीक है? like ऐसा ना करो कि सब के सब यही सेम चीजें डाल दो, just try to maybe find some related points. As per my experience, you can mention about the social and cultural norms, which is a big thing. आप ये कह सकते हो कि maybe like there is no trend or there is no acceptance of female leaders in our country, and आप उसमें कह सकते हो कि like there are the cultural limitations or maybe the religious things जैसे लोग कहते हैं, I think वो पर्दा और कि फीमेल को घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। आप उन चीजों को डाल सकते हो कि like due to those concepts or maybe due to those mindsets it's difficult for women to come out of their homes and practice this leadership. Secondly, the best thing that I would say कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था कि आप ये कह सकते हो कि like see in Pakistan अगर हमको ये कहे कि like maybe the person is doing masters in leadership, everyone will laugh on them कि क्या पढ़ने वाली कोई चीज है। So you have to mention these things कि पाकिस्तान में there is no concept of studying leadership or communication, these kind of things. आप कह सकते हो कि there is like lack of opportunities in learning about leadership and also practicing. जब आप सीखोगे नहीं आप practice कहाँ से करोगे, तो आप वो कह सकते हो। एंड और आप क्या, और हाँ आप ये भी कह सकते हो कि लाइक सिंस देयर आर नो फीमेल लीडर्स, जिसकी वजह से आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलती। सी फॉर एवरीथिंग यू नीड सम इंस्पिरेशन, राइट? अगर कोई फीमेल है ही नहीं, हाउ कैन यू लाइक गेट इंस्पिरेशन? तो आप इस तरह के पॉइंट सीख सकते हो। बट या आई विल सजेस्ट कि आप जाके पॉडकास्ट में भी देख लो और मे बी रीड सम रिसेंट आर्टिकल्स ऑन दीज जो लोगों ने लिखी हो और उससे रिलेटेड आप कर लो। बट मेक श्योर कि आप जो चीजें डिस्कस करें दे आर रियलिस्टिक, क्योंकि सी इवन अमेरिका में भी फीमेल लीडरशिप इज नॉट दैट अ बिग थिंग कि मैं कहूँ वहां पे तो हर दूसरी, वहां पे भी लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो इसलिए आपने कोई इतना एग्जेजरेट नहीं करना है कि कोई फीमेल है ही नहीं, देन हो कि पाकिस्तान में थोड़ी बहुत फीमेल लीडरशिप है। जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि रियलिस्टिक हो और जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो दैट समथिंग के लाइक समथिंग जो कि बहुत जनरल हो, ऐसी बातें अपनी नहीं करनी है। मेक श्योर कि उसे स्पेसिफिक कर लो। ओके, सो आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। हमारे पास एक ब्रांड है, शूज ब्रांड, एटम्स उसका नाम है। आपको पता होना चाहिए वो दोनों, वो जो उसके को फाउंडर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। देयर इज अ मेल एंड फीमेल एंड आई रीड देयर स्टोरी, ठीक है?
So it is very inspiring story. So you can just go and search about them, or you will learn कि किस तरह से the female struggle a lot to make that brand successful. कैसे उन्होंने उस आइडिया को, अपने बिजनेस आइडिया को सक्सेसफुल बनाया, और वो दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स में से इस वक्त है. और यू कैन सर्च आउट द एटम्स शूज और देख सकते हैं. अच्छा, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है. Give an example of Pakistan female leader you admire. Describe qualities that make her an effective leader. So what do you think about this, Rahima? Okay, so for this question, I would say this is a personal question और हर किसी का अपना होगा. Yeah. Like, since it's your inspiration, तो आप like maybe find some female leader in your field. Like for example, if I'm studying economics, तो फिर मैं कोई female economics के बारे में लिख सकती हूँ, but make sure कि आपको उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता हो. Just do your research for that person. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, or even maybe if you could connect with them, there's a very good thing. But still, yeah, क्योंकि that might not be possible for every female leader. But yeah, just to make sure कि उनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हो. Second, it's not necessary कि वो female leader कोई global level का हो. Like I've seen people recently जो मैं Sophie's reviews कर रही हूँ, most of the people have written about these people like Malala, Benazir. See, I would say कि Benazir के बारे में लिखना is a big thing, ठीक है, क्योंकि बहुत कम दुनिया में female leaders रह चुकी है in politics. आप उनके बारे में लिख सकते हो, मलाला के बारे में लिख सकते हो. इसी तरह से कोई भी फीमेल लीडर जो आपके फील्ड में हो, उनके बारे में लिख लो. बट अगेन आई वुड से ट्राई टू मेक श्योर उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया हुआ कि उन्होंने क्या किया था. और अगर आप कौन से किसी तरह से कनेक्शन बन जाए कि that's the person whom I'm inspired by because this is related to my field and I want to be like her, this is the war. I think that's something that can make your essay unique from others. Shahi, you're mute. आई एम सेइंग कि अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सैयद हुसैन को और अब्दुल कदीर को, और आप अपने आप को अनम्यूट ही रखें और क्वेश्चंस को जरा डिस्कस कर लें, क्योंकि हमारे पास अब 10 मिनट रह गए और 10 मिनट में हमने चीज़ों को थोड़ा सा ओवर थ्रू करना है. राहिमा आप भी कर लें, ठीक है. सो अभी हमारे पास एक और वो है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है. एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिसी विच यू बिलीव नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है. आर यू अप्लाइंग फॉर SUSI पॉलिसी फॉर ओके. हमारा प्लीज लिस्ट योर वर्क. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस एक साइड पर है और मेंबरशिप और एसोसिएशंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अलग अलग हैं. सो राहिमा एंड सैयद हुसैन, हाउ यू डिफरेंशिएट दीज थिंग, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पर मुझसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ यू डिफरेंशिएट दीज टू थिंग्स. Rahima, would you go for it or should I go? Yeah, sure. Oh, okay. So the first question is they're asking about any general volunteer work that you did, whether that's helping Al Khidmat Foundation, helping the conducting their blood campaign or any other organization. Let's say वो एक non-profit organization हो सकती है, आपकी यूनिवर्सिटी की कोई कमेटी हो सकती है, आपने उनके साथ थोड़ा सा हेल्प किया है, वो उस चीज़ के बारे में. सेकंड चीज़ जो आपके साथ वो मेंबरशिप्स और एसोसिएशंस मांग रही हैं, दैट्स द ट्रू थिंग. उसकी उसके रिलेटेड आई गेस वो आप लोगों से इस दफ़ा उसकी सर्टिफिकेशंस भी वो शायद आप लोगों से मांग ले. इफ़ एक बंदा है वो एक शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए एक चैरिटी डोनेशन कर रहा है, तो अगर आप उसमें ये लिखते हैं कि आई एम एसोसिएटेड विद शौकत खानम हॉस्पिटल और उसमें मैं फंड रेजिंग इवेंट्स करता हूँ या मैं चैरिटी कलेक्शन करता हूँ, फॉर दैट यू हैव टू प्रेजेंट अ सर्टिफिकेट विद दैट, लाइक ट्रू थिंग्स, जो कि आपके साथ उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेट है, आप एक प्रॉपर रजिस्टर्ड मेंबर है उनके साथ, वो आपने मेंबर्स और एसोसिएशंस में लिखना है. और जो ऊपर वाला है दैट सिंपल, आपने छोटा सा काम ही क्यों नहीं किया. लेट्स से एक बंदा है वो यूनिवर्सिटी में एक डिबेट कंपटीशन रेडी करवा रहा है, आपने सिर्फ उसके लिए पार्टिसिपेंट्स ढूंढे, तो आप वो भी उसमें लिख लें. यूर म्यूट शायद भाई, आप म्यूट है. ओके राहिमा, नाउ यू कैन गो एंड उसके बाद अब्दुल कदीर. अच्छा, मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, लाइक जो मेंबर एसोसिएशंस के अंदर हम सोसाइटी के वर्क को भी ऐड कर सकते हैं, लाइक इफ वी आर पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी एंड वी हैव एसोसिएशन. ओके, सो Rahima, if you want to add anything to these questions, you can. Okay, so see, I think it more depends on the role that we're playing. For example, अगर जैसे हमारा अभी economics club है, if I'm like
playing my role as a member, तो obviously वो membership में आएगी. But maybe Okay. if you are head of the society, तो फिर वो उस वक्त आप like leadership वाले इसमें डाल सकते हो. However, if you have done something maybe in the volunteer work, आपने किसी NGO के साथ काम किया, तो फिर वो आप leadership. I think it's very clear. बस आप अपना role देख लो कि आपने क्या role play किया था, उसी के हिसाब से आप. Okay, so these questions are answered now. अब आपको आइडिया होगा कि वर्क वॉलंटियर वर्क में और एसोसिएशन मेंबरशिप और एसोसिएशंस को डिस्कस करते हुए हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और हमारे पास कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं. ओके, पॉलिसी, व्हाट इज आवर इंटरेस्ट इन नेशनल पाकिस्तान लेवल. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस कर लिए हैं. ओके, थैंक यू. अब मैं ज़रा स्टॉप शेयरिंग. So thank you so much everyone for joining us, and thank you so much Abdul Qadir. Although Abdul Qadir was facing difficulty in internet connection, but he tried his best to stay connected with us. And thank you so much Rahima for sharing your experience. Sayyid Hussain Shah and Abdul Qadir. Shahzeb ko jana tha, so he left us earlier, but thank you so much for him to joining us. और अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, you can ask us जल्दी जल्दी, and we will try to answer this. I guess Arifa has a question. Arifa Okay. Qazi. Okay. Just ask her question. As I have researched Jakku, I have a question. Okay. Am I audible to you guys? Yes. Yeah, you So are. basically, मेरा question ये है कि right now I'm in 7th semester and I'm an education student. So depending upon the time, जो 2024 का ये program है, तो when I will be going for it if I get selected for it. In the end of after you're getting graduation, आपके 8 semester पूरे हो जाएंगे. To be specific, I would the like to form- answer. हाँ. Okay, Qadir, वो go on. हाँ ओके. तो यार असल में आप जब सूसी के लिए अप्लाई करना होता है तो सूसी प्रोग्राम इज इन समर्स, ठीक है. तो आपको मेक श्योर कि आप वापस आके आपके पास एटलीस्ट एक सेमेस्टर होना चाहिए, या आपके पास हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके फाइनल्स जो थे वो समर्स के बाद थे. तो मेक श्योर कि आपका एक सेमेस्टर रहता हो जब आप सूसी कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर आए. तो आई डोंट थिंक सो कि आपका जब 8 सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो यू विल बी ग्रेजुएटेड. तो आपके लिए आई डोंट थिंक सो कि आप अप्लाई कर सकते हो. लेकिन अगेन आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, पॉलिसी चेंज हो सकती है, लेकिन हाँ. समर्स के बाद अच्छा, आपको एक सेमेस्टर यहाँ पे पुट मेरे करना है. मेरी यूनिवर्सिटी से और मेरे डिपार्टमेंट से एक गर्ल सेलेक्ट हुई थी. सो शी वेंट एट द एंड ऑफ 8th सेमेस्टर Okay. and till then she was an undergraduate student. So Okay. that's why I was asking. यस. अच्छा, अभी जब हम इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं तो रिक्वायरमेंट्स में भी यही लिखा हुआ है कि कम से कम आपका एक सेमेस्टर रहता हो. इट्स मीन कि आप 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, 8th सेमेस्टर आपका अगला साल होना चाहिए, यानी एप्लीकेशन डेडलाइन गुजरने के बाद, और आपको समर्स में बुलाया जाएगा. तो यस, यू कैन अप्लाई, एंड आई एक्सपेक्ट इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप सिलेक्ट हो जाएं. और एनी अदर The only क्वेश्चंस? limitation is that you must have to be an undergraduate. कोई इस Yes. तरह की अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, वो उसका मैटर नहीं है. द ओनली थिंग वो लोग ये चाहते हैं कि आप अंडर ग्रेजुएट हो बस. एट द टाइम अगर आप अप्लाई करें तो आप ये देखें कि अगर एट द टाइम मेरी सिलेक्शन हो, विल आई बी अ ग्रेजुएट और नॉट. सिर्फ इसका ख्याल रखें, दैट्स इट. सिर्फ ये शर्त है कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं. अच्छा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आई थिंक अप्लाई नहीं कर सकते, सेकंड सेमेस्टर के बाद वाले अप्लाई कर आई सकते. गेस सर फर्स्ट सेमेस्टर वाले कर सकते हैं, बिकॉज Okay, मैं एम ठीक है. साइंसेज में हूं और 2-3 स्टूडेंट्स एम साइंसेज से Okay. भी कर लिए अप्लाई. ओके, वुमेन इन लीडरशिप रोल्स पर सर्च. आप अप्लाई कर दो, आप हाँ. अप्लाई कर दो, ठीक है. आप अप्लाई कर दो, फिर आप प्रोबेबिलिटी देख लेंगे. अगर हो जाता है तो वेल एंड हाँ, गुड, ठीक और नहीं होता तो आपको पता लग जाएगा क्या होता है आपके पास. जस्ट अप्लाई इट, अप्लाई करने में क्या हर्ज है. Sir, I have a question. यस, आस्क जल्दी पूछें, टाइम खत्म होने वाला है. The first question of this application is, what one initiative would you be interested to initiate on a national level in Pakistan? If you were in a leadership role, how would you plan, implement, and measure its success? Can you answer this question by giving an example just to elaborate it, that how I will be able to write it? This is also a question, by the way, in the application. So anyone? या आई कैन गिव इट आंसर. Okay. तो यार ऐसे सवाल में ना सबसे पहले आपको मेक श्योर कि आप
कोई ऐसी चीज पकड़ो कि आप अपने लेवल तक रखो। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप पहुंच भी जाओ, लेट सपोज कि अब मैं अगर वादा करूं कि अब मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, अगर मुझे पोजीशन मिल भी जाए तो आई कैन नॉट डू दैट, बिकॉज एक बहुत मैसिव लेवल पे वो एक प्रॉब्लम है, एक सिनेरियो आपके पास जिसको आप टैकल नहीं कर सकते। अब ये सवाल आई थिंक हमारे पास भी था, तो जो हमने बात की थी वो थी यार पॉवर्टी एडिकेशन पे। तो अब थोड़ा सर्च करो कि पॉवर्टी कितना है, या अब पॉवर्टी और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस, जो मैंने इसका रिस्पॉन्स देखा था कि अगर किसी ऐसी पोजीशन पर हूँ, ऐसी लीडरशिप पोजीशन पर हूँ, तो मैं कौन कौन सी चीजें ऐड कर सकता हूँ। तो द वन थिंग आई रोट वाज कि यार आप पॉवर्टी एडिकेशन पे बात करो, जो मैंने की थी, और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस। अब इसके अंदर आप इसको अगेन आप वर्ड्स के साथ खेल सकते हो कि आपके पास आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस कितने हैं, आप क्या मेजर्स लोगे। अब जिस तरह मैंने ऐड किया था ना कि मैंने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी वो थी एजुकेशन की, तो एजुकेशन वो प्रॉब्लम और इस सवाल को मैंने लिंक कर दिया, क्या एजुकेशन की एक प्रॉब्लम है और स्टूडेंट्स भी कम है। या घोस्ट स्कूल जिस तरह से की अगर बात करें तो एक मतलब जिन्नात वाले स्कूल बोले जाते हैं कि मतलब स्कूल तो एग्जिस्ट करते हैं ऑन द डॉक्यूमेंट्स, बट दे आर नॉट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वो ग्राउंड पे है नहीं, लेकिन वो मतलब डॉक्यूमेंट्स में वो करते हैं। तो आप इस चीज को कैसे खत्म करोगे? तो मेक श्योर कि बी रियलिस्टिक अगेन, और ऐसी ना कि मतलब आप ऐसी चीज का मैं ये कर दूंगा, मैं सबको जेल में डाल दूंगा, नॉट लाइक दैट। कि सिर्फ आप ऐसी चीज करो कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस में कोई, अब मैं बच्चों को स्कूल में लाना है तो व्हाट इंसेंटिव्स डू वी शुड वी गिव टू द पेरेंट्स कि यार वो एनकरेज हो कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। जिस तरह आप ये इसमें लिख सकते हो कि यार बेनिफिट इनकम सपोर्ट एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वो एक प्रोग्राम कंजम्पशन लेवल पर है। अगर ऐसा ही कोई प्रोग्राम आप शुरू करो कि अगर आपके बच्चे स्कूल में जाएंगे तो मैं आपको आपको उनके बदले कुछ इंसेंटिव, कुछ पैसे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये आप एक पॉलिसी मेकिंग में आप लिख सकते हो। ओके। अगेन दूसरी चीज आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि आप